Hello everyone, here I'm back with the part 5 of chapter 11, that is force and pressure. So, as in the previous video, we have discussed about what force is and what is pressure. And even we discussed about liquids also exert pressure. So now today we are going to start the topic of atmospheric pressure and its applications. It means air also exerts pressure. So, the topics that we are going to cover today are what is atmospheric pressure, activity to show presence of atmospheric pressure, effect of height on atmospheric pressure, and in last some applications of atmospheric pressure. So, firstly, we are starting with atmospheric pressure. What does atmospheric pressure means? So, basically, as we know that solid exerts pressure, liquid exerts pressure, and in last, gases also exerts pressure. So, how the main gas, that is air, which is surrounding us, is exerting pressure? First of all, as we know that layer of air surrounding our earth is called as atmosphere. We live on earth and there is lot of air around us, and this air is surrounding our earth, which is called as atmosphere. We know that this atmosphere extends up to several kilometers above the surface of the earth. Now, this air has weight, therefore it creates pressure on the objects below. एयर के अंदर वेट है, therefore वो क्या करेगा? It exerts pressure or creates pressure on the objects which are present below. So basically, the pressure exerted by air due to its own weight is known as atmospheric pressure. एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अपने खुद के वेट से, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The atmospheric pressure on Earth's surface at sea level is about 100 kilopascals. 1 pascal multiplied by 100 kilos, that is called as 100 kilopascals. So this is an enormous amount of pressure acting on us. So why do we not feel it? हम इसे feel क्यों नहीं कर पा रहे हैं? The reason is that the pressure of blood in the blood vessels and the other fluids present in our body is also exerting pressure, and it is balancing the atmospheric pressure. As liquid is present inside our body in the form of blood and many other fluids. So these fluids and blood is exerting pressure, and this pressure is balancing the atmospheric pressure. That's why we are not able to feel this atmospheric pressure. But we can prove that the presence of atmospheric pressure. How we can do we prove that? We can prove it by an activity. What we can do? We have to take a glass filled with water. हमें एक ग्लास लेना है जो properly filled है water से, and we have to cover it with a piece of thick card and we have to press it hard. हमें क्या करना है, उसे एक थिक कार्ड उसके ऊपर रख देना है और उसे प्रेस करना है, ज़्यादा फोर्स लगाना है, एंड कीप द कार्ड इन पोजीशन विद वन हैंड. और एक ही हाथ से हमें उसे उसकी पोजीशन पर रखना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इन्वर्ट द ग्लास फुल ऑफ वाटर. जो ग्लास है जिसके अंदर वाटर फिल था, अब हम उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, मीन्स उल्टा कर देंगे. नाउ you have to withdraw the hand that is supporting the card. जिससे आपने उस कार्ड को सपोर्ट दिया हुआ था उल्टा करने पर ग्लास को, अब आप उस हाथ को भी हटा लेंगे. नाउ what will you observe? You observe that the card does not fall. वो कार्ड गिरेगा नहीं. Why? It's just because atmospheric pressure acts on the card in the upward direction. You can see here, this is a glass which is full of water and I placed a card
over it. Then I inverted the glass tumbler and I observed that the card will not fall down even by removing my hand. Why it does not fall? It's just because the atmospheric pressure is acting on the card in the upward direction. The water is moving to be downward, but the card does not fall and the water will not come out of the glass just because the atmospheric pressure is acting in the upward direction. The upward atmospheric pressure acting on the card is greater than the downward pressure of water on the card. जो atmospheric pressure है वो ज़्यादा है as compared to the downward pressure of water on the card. As I told you, how much pressure is exerting by air? That is about 100 kilopascals. So that pressure is more as compared to pressure of water. Therefore, the card does not fall. So the conclusion is this shows the presence of enormous atmospheric pressure around us. यहाँ ये क्या प्रूव कर रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है. Now we are going to discuss about the effect of height on atmospheric pressure. We know that the atmospheric pressure is maximum on the surface of the earth. अर्थ के ऊपर atmospheric pressure जो है वो maximum है. And when we go to high altitudes, जब height increase होती है, altitude के ऊपर जाते हैं, like mountain, the atmospheric pressure decreases. वहाँ क्या होता है? atmospheric pressure जो है वो decrease हो जाता है. That's why the mountaineers, it means those who climb mountains, suffers from nose bleeding at high altitudes. जब वो ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो what they suffer from? They suffer from nose bleeding. Why? Because at high altitudes the atmospheric pressure is less than our blood pressure. So blood will come out of our body from nose and leads to nose bleeding. Due to this, some of the blood capillaries may even burst and blood comes out through the nose of the mountaineers. And one more example of this is of astronauts. As you know that astronauts wears a special space suit. Why they wear a special space suit? It's just because this maintains the normal atmospheric pressure for their body, and since we know that there is no atmosphere outside the earth, तो उनकी बॉडी के अंदर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉट स्पेशल डिज़ाइन सूट पहनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेस सूट्स. नाउ we are going towards the last topic of this chapter, that is applications of atmospheric pressure. ये atmospheric pressure हमारे लिए helpful कैसे है? कहाँ कहाँ हम इसे observe करते हैं? So first and the most common example is drinking through straw. आप कोई जूस लेते हैं या कोई ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, you observe that it is having a straw. So how the straw helps the liquid from the glass to rise up? It's just because of the atmospheric pressure. वहाँ भी atmospheric pressure का रोल है. We normally use a drinking straw to drink fruit juice. When we suck air, हम जब suck करते हैं air through the straw, the upper end of the straw with our mouth is exerting pressure and taking the pressure of the air inside the straw out. हम क्या करते हैं? सक करते हैं. तो सक करने पे क्या होता है? वो जो स्ट्रॉ है उस स्ट्रॉ में से सारा प्रेशर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. बट द प्रेशर विच इज़ एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द जूस इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो जूस के ऊपर प्रेशर लग रहा है वो इक्वल है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. इट मीन्स जूस के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम है. So in that case, the pressure will travel from the higher to the lower place. So the juice from the glass will move towards the straw and it enters into our mouth.
So the greater atmospheric pressure acting on the surface of juice pushes the fruit juice up into the straw to our mouth. So this is one application of atmospheric pressure. Now we are moving towards the second application, that is of syringe. सिरिंज को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इंजेक्शन. तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब भी हम एक सिरिंज को लिक्विड के अंदर डिप कराएंगे और हम क्या करते हैं, ये पीछे उस पर पिस्टन होता है जिसे हम पीछे खींचते हैं. सो उसके अंदर जब हम उसे पुल करेंगे, पुलिंग द पिस्टन ऑफ दिस सिरिंज, तो उसमें क्या होगा, द प्रेशर इनसाइड द सिरिंज विल डिक्रीज, कम हो जाएगा. एंड एज वी नो दैट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आसपास क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. सो द लिक्विड will rise in the syringe and the syringe will get fill up. So the atmospheric pressure acting on the surface of the liquid is more in comparison to the air pressure in the syringe, and thus it pushes the liquid up into the syringe. इसीलिए लिक्विड क्या होता है, सिरिंज में चला जाता है, बिकॉज जब हमने पिस्टन को पुल किया तो जो हमारी सिरिंज है उसके अंदर प्रेशर कम हो गया, लेकिन जिस लिक्विड के अंदर हमने सिरिंज को रखा हुआ था वहाँ कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो प्रेशर ज़्यादा है. तो वो प्रेशर क्या करेगा, उस लिक्विड को हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे पहुंचा देगा. इट मीन्स द लिक्विड राइजेज अप इन द सिरिंज. एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज ऑफ रबर सक्शन पैड. These rubber suction pads are basically used on walls to hang clothes and calendars, and even they are used in cars on windows also. They are of this shape, and when good quality rubber suction pad is pressed against the smooth plain surface, जब ये rubber suction pad को smooth plain surface पे press किया जाता है तो जो उसके बीच की air है वो वहाँ से बाहर निकल जाती है. द एयर इज़ फोर्स्ड आउट, एयर वहाँ से बाहर निकल जाती है. सो इट विल रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड, अंदर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा. सो द आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर, बाहर का जो प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, pushes the suction pad firmly and it will remain stick to the surface of the wall. और जब आपको इसे रिमूव करना होगा तो यू हैव टू अप्लाई अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बहुत इजीली ऐसे ही बाहर नहीं निकलता, आपको उसको एक स्लाइट एरिया से पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तब वो बाहर निकलता है. एंड इन दिस वे योर रबर सक्शन पैड वर्क्स. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर 11, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe and share.